Hello everyone and welcome to this C programming tutorial. I'm Humesh Deshmukh and I'm excited to take you on journey through the fundamental of C programming language. Whether you are absolute beginner or someone who looking to brush up their C skills, you are in right place. In this series, we will start from the very basic and work our way up to more advanced topics. उससे पहले कुछ C की हिस्ट्री और उसके फीचर्स देख लेते हैं. Some features. What is your C? C language क्या है? It is general purpose programming language developed in early 1970s at Bell Lab by Daniel Ritchie. It is a high-level programming language that particularly well suited for the system programming and creating or other high-performance applications. It influenced many modern programming languages and widely used various domains including operating system, embedded system, game development, etc. C ऐसे लैंग्वेज है जो वाइडली गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज़ होती है. इसको एक तरह से सी या आज भी दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली लैंग्वेज है. उसके कुछ हिस्ट्री. ये 1970 में ओरिजिनेट हुई थी. स्टैंडर्डाइज हुई थी 1989 में, 89 एंड 1990 में. 1919 के बाद इसका स्टैंडर्ड वर्जन निकला था पब्लिक के लिए. इसका इसके कुछ सब फीचर्स है. ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सी. उसके बाद ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, इफिशिएंट है, स्टैंडर्ड टाइपिंग है, स्टैटिक टाइपिंग है, रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और मेमोरी मैनेजमेंट है इसमें. पॉइंटर सपोर्ट है, कम्युनिटी लाइब्रेरीज, लो लेवल फीचर्स का एक्सटेंसिबल. इन दिस सीरीज वी कवर ऑल दिस टॉपिक्स. आप इसको इस वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं. उसके बाद इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एकदम शॉर्ट में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे. उससे let's dive in, and the first thing we need to do is set up our environment for C program. To follow along, you will need to zip compiler. If you're using Windows, you can install something like CodeBlock, VS Code. For Mac OS, you can use the Xcode, and on the Linux, you will likely have to GCC compiler already available. Uh, First upon, we run VS Code. Make a min.c file. Then for our very first program, we are going to write the classic Hello World program. Here you can see Hello World program is executed. We go through this code step by step to understand what each line does. We start by including the started input output library. You can see here we include header file. In this header file, input output star printf, all the keywords or everything is available, included. For in the main function is where our program beginning. It's executed. Inside it we use a printf function to print the hello world to the screen and return 0 to indicate the successful programming execution. Uh, we can see all other topics in next video. In this video, we just write a hello world program. We'll meet in next video. If you like this video, subscribe to my channel. Thank you.